Okay, dear students, good afternoon. How are you? Uh, First of all, in order to avoid the confusion, I have to discuss about the program. Do you know, actually my batch is always announced according to the prior program. So, from 10th onwards, I have decided to start the modern history. Okay, but 5 classes are still, you can say, we are just running short of the 5 classes in world history part. So, I have to continue with the classes. I will give you the program after today. And today we have to discuss this, you can say, particularly the history of modern India. Have you received the booklets? Have you placed a one booklet here? My students, I am just coming to the point directly. Even in the part of world history, because first of all I have to cover this first one paper, second one paper, and this second one paper is much analytical. And if you are analytically strong, that will prove too much marks fetching for you people. And definitely you can excel in the second paper if you have developed the analytical approach. In world history part, you people might have realized I have adopted a paradigm shifting approach. Always I am adopting the paradigm shifting approach, whether it may be general studies, history, whatever may be. Now we are making a study of modern history. So my students, even in the part of modern history, you have not to follow, you can say, the traditional established course of action. That will definitely spoil your whole preparation. You may realize at your home, तुमने जब पढ़ाई शुरू की होगी या मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो तुमने रियलाइज किया होगा you are moving from page to page. Suppose some student, he is just starting modern history and he is opening the page, so the story starts with European companies, or even earlier than that, according to our syllabus, European companies. Coming from Portuguese company to the British company, and conflict between the British and the French power that is known as Carnatic War. And again, starting from there, you are just moving to the Battle of Plassey, then Battle of Buxar, Diwani of Bengal, etc. And you are moving to Warren Hastings. After Warren Hastings, the next one topic is Lord Cornwallis. Going across the topic Lord Cornwallis, you make a study of permanent settlement. After permanent settlement, you are directly moving to Rayatwari, then Mahalwari. Then you are once again jumping to the topic Lord Dalhousie. William Bentinck, reforms of William Bentinck. After doing William Bentinck, then you are just jumping towards Lord Dalhousie. So in this way you are moving, and then economic reforms or British colonial economic policy, Then suddenly you are coming to some tribal, some peasant movement or the Great Revolt of 1857. Even after the Great Revolt of 1857, the peasant and tribal movements. So my students, here I have to inform you, all your topics are going to be disjunctured. तो इस तरह से अगर डिसजंक्चर ढंग से हम पढ़ाई करते हैं, तो इसका सबसे बड़ा वीकनेस होता है कि हमें असली वॉरियर वह है जो रोट लर्निंग करके ही जस्ट प्लानिंग टू क्वालिफाई यूपीएससी एग्जामिनेशन, क्योंकि स्काई इज द लिमिट. आप कहां से पकड़ोगे? आप क्वेश्चन ही नहीं पकड़ पाओगे. यू माइट हैव हर्ड द स्टोरी अबाउट धनुष यज्ञ ऑफ लॉर्ड राम, नॉट टू स्पीक ऑफ pushing the dhanush. The kings were not able to even move the dhanush from its actual place. The same happens in case of UPSC.
सेम हैपेंस इन यूपीएससी कि पहला चैलेंज हमारे सामने होता है क्वेश्चन समझना, और तो और छोड़िए, इतने सारे टॉपिक्स हैं, उसको हम रिटेन कैसे करें, कैसे हमारी मेमोरी में रहे। एंड इट इज ड्यू टू दिस फैक्ट, the students are normally blaming history and geography are full of informations are there. Even some students are making complaint to me, sir, full of informations are there, history is the full of informations. Sir, how to memorize the events, how to memorize the dates? I am suggesting at least go through the first chapter of NCERT book class 8th. Even there it has been denoted and a very pertinent question has been raised. How important are dates? तारीखें क्यों महत्वपूर्ण है? कभी पढ़ा है? Have you ever read this chapter? Why are dates important? In today's history, dates are not so important. Dates used to be important in history when we were making a study of history event based. Event-based history. At that time, the history of dynasty, that of the king, that of the wars, battles, etc., they were much important. So we were recording them through dates. But today, more emphasis over the socio-economic and cultural history. And for the socio-economic and cultural change, no date can be specified. In your NCERT book, they have given you the example of newspaper. Newspaper is being published. Have you ever discovered why the people have started to publish newspaper? What was the socio-economic aspect behind that? Likewise, you are just undergoing some cultural change. Your attitude of life is going to change in 19th century and socialist reform movement has started. It is clear that Raja Ram Mohan Rai was born this period and that period. But why did Raja Ram Mohan Rai move towards social reforms? For that there is no date. तो पहली बात मुझे ऐसा लगता है कि स्टूडेंट जो 99% स्टूडेंट जो यूपीएससी का प्रिपरेशन करते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि सब्जेक्ट कैसे पढ़ा जाए. And I inquired from some student, when a student come teacher, you can say. Once he came to me and informed me, sir, I can teach history if you are having any chance. I became too much eager about him. You are just, since last 4 to 5 years or whatever, maybe I have been teaching it. I inquired from him, how are you teaching history? For example, modern history, because this is normally, I have selected modern history because this includes the national movement of India, and national movement of India is supposed to be the part of romantic history. That is called, you can say, romantic history of India. One part national movement. He informed me, sir, in order to inculcate the interest into the topic, we are just doing the national movement, history of national movement first. And then we are coming to the battle of Palasi, Buxar, etc. That is. हमने कहा कि भाई इस तो उसी तरह का कोई मूवी हुई जिसमें पहले एंड दिखा देते हैं कि भाई कैसे उसका डेथ हुआ और कैसे ही वाज किल्ड, एंड देन दे स्टार्टेड द मूवी इन फ्लैशबैक फ्रॉम चाइल्डहुड. तो हिस्ट्री में इसके लिए जगह नहीं होती है. दीज आर द स्टेयर्स, इवॉल्व करती, फ्रॉम वन टॉपिक टू अदर टॉपिक इवॉल्व करती. अब लेट अस स्टार्ट डायरेक्टली फ्रॉम द टॉपिक, इन व्हाट वे आई एम गोइंग टू टीच यू डिफरेंटली. My students, in modern history,
I have divided modern history in the four major divisions, four parts. Part 1. First of all, you people have to start writing. To make a study of history, to make a study of history means to underline the forces of continuity and those of change. Means कि if someone is going to ask you कि what is history and how to make a study of history, so you have to define the study of history. To make a study of history means to underline the forces of continuity and those of change. The forces of continuity and those of change. To make a study of the forces of continuity and those of change. That does mean the study of history. You can ignore the forces of continuity because forces of continuity is automatically will come to your mind as you are going to make a distinction between the forces of continuity and the forces of change, and whatever remained after change, that is continuity. Up this is so question arises whenever you are making the study of modern history, so you are supposed to cover the history of nearly 250 years. 250 years, you can say, starting the story from the 18th century onwards and coming up to the mid 20th century, not simply mid 20th century, even above that, because you have to cover the Nehruvian era. So up to the history of 1970s, 1975, etc. So you have to cover the topic even after the mid 19th century. अब चलिए अब यहाँ से हम को जब चेंज अंडरलाइन करना है तो हाउ टू अंडरलाइन द चेंज. So it is not possible to underline the change directly from 18th century to the mid 20th century through a single one method. So in order to underline the change, in order to underline the change, we have to divide different parts of history, divide modern history in four parts first. Now you are supposed to underline, or you can say you are supposed to divide history in four parts in order to underline the forces of change. That is in four parts. Part first, history of 18th century. History of 18th century. History of 18th century. And in history of 18th century should be divided into two subparts. Two subparts you have to cover. Two subparts. One subpart is decline of
Mughal Empire, decline of Mughal Empire and the rise of regional states. मतलब आपका जो पहला पार्ट कवर करना है, this consists of the decline of Mughal Empire and the rise of regional states. Up here you can say your syllabus starts with the advent of European companies. So you may ask me a question, why should I move from the history of the first half of 18th century when there was the decline of Mughal Empire and the rise of regional states, It is due to the factor that so far as you are not much clear about what was the political scenario of India after the decline of Mughal Empire. So whenever there was the expansion of the British in India, so British was going to annex the Indian states one by another. So at that time you will be not familiar with those states, but whenever you are familiar with those states at the time of disintegration of Mughal Empire, what is the political scenario of India, then the things will be crystal clear. How did British progress to annex the states one by another? Do you understand my point or not? And apart from that, there is the debate of historiography. Sometimes the debate they are going to ask you in Mughal period or the first paper or end of the first paper, and sometime just along with the battle of Palasi in the history of second paper. तो वो क्या होता है कि कई बार वर्ज करता रहता है. जो हिस्ट्री ऑफ 18th सेंचुरी, फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी में एक डिबेट है, हिस्टोग्राफिकल डिबेट है. क्योंकि देखो ऑप्शनल आप पढ़ते हो, ऑप्शनल में अच्छे मार्क्स लाने के लिए बिना हिस्टोग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग के नहीं हो सकता. थोड़ा तो इम्प्लाइड हिस्टोग्राफी का नॉलेज जीएस में भी चाहिए, because sometime in general studies they are taking some stand, and it is better for you to have some knowledge of historiography in order to take a stand on the topic. For example, I am just telling you, in 2014 they asked you a question. Lord Dalhousie was the maker of modern India. Lord Dalhousie was the maker of modern India. Elaborate the statement. So if you are just going to accept Lord Dalhousie as the maker of modern India outrightly, it means you are not doing justice to the question. क्योंकि Lord Dalhousie didn't come to India to modernize it. There is certain implicit historiography here. And at that time, I am recalling in general studies paper, almost all the students have answered this question in the manner, Lord Dalhousie carried these reforms, that reform, that reform, that reforms, as if Lord Dalhousie came to India for philanthropic work. तो लॉर्ड डलहौजी रिफॉर्म्स क्यों करना चाह रहे, इसके पीछे तो एक हिस्टोग्राफिकल पर्पस है, इसके पीछे एक आइडियोलॉजिकल फैक्टर है और एक हार्डकोर कॉलोनियल इंटरेस्ट है. आइडियोलॉजिकल फैक्टर है यूटिलिटेरियन थियरी का इंपैक्ट, एंड हार्डकोर मटेरियल कॉलोनियल इंटरेस्ट है to create the congenial atmosphere for British industrial capitalism in India. इन दोनों को जब आप लिंक जब तक नहीं कर पाओगे तो फिर क्वेश्चन का आंसर मुश्किल हो जाए. तो फर्स्ट पार्ट में हम 18th सेंचुरी वाले में इसको कवर करेंगे, एंड द सेकेंड वन दैट इज advent of European companies and advent of European companies and transformation of British company
from a mercantile company into a political power. अब चलो पहले पार्ट फर्स्ट में निपटा देता हूं आपको हिस्टोग्राफिकल करंट वगैरह के साथ, तब हम पार्ट 2 में जाएंगे, क्योंकि वो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, देयर आर 4 पार्ट टोटल। अब इसमें क्या रिक्वायर्ड है या मैं आपको कैसे पढ़ाने वाला हूं, मैं आपको बता रहा हूं। हम हमेशा पसंद करते हैं कि एक माइंड मैप बच्चों के दिमाग में हो, तो हम पहले आपको लेंगे, जस्ट डायग्राम बनाइएगा, फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी। फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी, डिक्लाइन ऑफ मुगल एम्पायर। पुट डाउन करो ना, इसलिए ये बड़ा यूजफुल है, समझ रहे हो, टूडेज क्लास, क्योंकि एक बेसिक फाउंडेशनल अंडरस्टैंडिंग तुम्हारी होगी, देखने का नजरिया बदलेगा। जो मैं कहता हूँ खिड़की खुलेगी और घूंघट हटेगा, वो तो रेगुलर क्लास में होगा, लेकिन कम से कम whenever you are going into the war, so at least you have to discover ki what sort of obstacles you have to cover and you are supposed to win. So at least, अब देखो कितना साइंटिफिकली मैं तुमको लिंक कर दूंगा हिस्टोग्राफिकल करेंट से भी, और इंफॉर्मेशन भी तुम्हारे सारे याद, जो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन है जिसके लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। यू विल जस्ट लाइक इनहेल योर ब्रीथ, so you will inhale your informations automatically. अब जैसे इसमें एक डायग्राम बनाएंगे, decline of Mughal Empire, rise of regional states and their categorization. जैसे whenever there was the decline of Mughal Empire and the rise of regional states, so the process was not uniform. मतलब ऐसा नहीं हुआ कि मुगल एम्पायर का डिक्लाइन हुआ और सारे स्टेट्स एक ही तरह से आ गए, एक ही कारण से आ गए। इसमें भी कैटेगोराइजेशन था। स्टेट्स, और यू कैन से successor states, okay, then states created through revolts, and third, states outside the periphery of outside the periphery of Mughal Empire.
आउटसाइड द पेरिफेरी ऑफ मुगल एम्पायर। मुझे लगता है कि वो मैप, एक मैप की यहाँ हमको जरूरत पड़ेगी, समझ रहे हो बेसिकली, बट इट इज नॉट हियर। वर्ल्ड हिस्ट्री का ही मैप, मैं आपको जो मैप लाऊंगा तो मैं आपको एक इंडिया का मैप यहाँ पर प्लेस करेंगे। ये तीन कैटेगराइजेशन के स्टेट्स, सक्सेसर स्टेट्स, दोज स्टेट्स which were carved out by the old Mughal officers. The second one states the states which were created by through revolts, and third, in Indian subcontinent there were certain states, and these states remained outside from the periphery of the Mughal Empire. अब देखो, एक कहावत है, प्रीलिम्स में भी कई बार क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो आपको लगता है जहां किश्ती मेरी डूबी वहां पानी बहुत कम था, they will just place the states की which one of the not, which one was not the, you know, successor state of the Mughal Empire. Choice A Hyderabad, choice B Pune, choice C Mysore, choice D Karnataka. Carnatic. दोनों का जितना पुअर शो क्यों है? कल तक तो बड़े स्मार्ट हुआ करते थे क्या? I am not simply, and which of the states has been the part of the Mughal Empire earlier? Hyderabad was not the part of the Mughal Empire. Who was Nizam? Have you heard about Nizamul Mulk Asaf Jah? Have you heard about? Was he not a successor? And Hyderabad has not been the part of the Mughal Empire, or has been. When the Aurangzeb conquered Bijapur and Golconda, so after the Aurangzeb's conquest, Hyderabad definitely became the part and parcel. तो हैदराबाद इसमें होगा, कर्नाटक भी होगा, because Carnatic was the part of Hyderabad. Later, Carnatic got separated from Hyderabad in 1748 and it developed as an independent state. Not to speak of Pune, this was the headquarters of Maharashtra, Later, it was captured by Marathas. But earlier, it was the nucleus region of Mughal Empire in South India. So definitely Mysore, it was the successor state of Vijayanagar. And Vijayanagar was not the part of the Mughal Empire. So now you can very well recall the couplet जहां मेरी किश्ती डूबी वहां पानी बहुत कम था. अब इतनी छोटी छोटी चीजें, ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग, जैसे अब मुगल एम्पायर डिसइंटीग्रेट किया, यहाँ मैप पर देखोगे भाई कितनी स्टेट्स हैं, कौन सक्सेसर हैं, कौन रिवेल से पैदा हुए, कौन पेरिफेरी से बाहर है, जैसे कोचिंग मैसूर है, कोचिन, त्रावणकोर, कालीकट, these were the outside the periphery of the Mughal Empire. So you might have heard a proverb, आम के आम और गुठलियों के दाम. Facts तुमको naturally as you are breathing, so you have taken the facts. Facts के लिए तुमको कोई effort नहीं लगाना पड़ा. Facts automatically तुम्हारी आंखों के सामने वो states है. मैंने जो मेथड अडॉप्ट किया, मैंने महसूस किया कि इससे ज्यादा फैक्ट्स याद नहीं, रिटेन नहीं किया जा सकता है जो हमने नेचुरल कोर्स में कर लिया, इवन एट द टाइम ऑफ द स्टूडेंट लाइफ यू कैन से, ये बहुत ही नेचुरल कोर्स, इसके लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं. तो दिस वाज क्लियर.
इन बच्चे इससे तुम्हारा प्रीलिम्स का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, छोटा मोटा सिंपलिस्टिकली यू विल सॉल्व द क्वेश्चन इन मेंस. But in order to fetch the good marks in main examination, you have to do something else. This one is decline of Mughal Empire. Theoretical interpretation. Product of crisis. And product of prosperity. Product of prosperity at regional level. अब देखो, अब तुम्हारा 18वीं सेंचुरी का फर्स्ट हाफ परफेक्ट हो जाएगा. मेंस में किधर से भी लपेट के क्वेश्चन पूछेंगे, यू कैन आंसर द क्वेश्चन. अब इसको तुम मान लो ये है तुम्हें हिस्टोग्राफी, ये हिस्टोग्राफिकल करेंट है. अब तुम्हारी तैयारी परफेक्ट हुई. Now we are just going to be perfect. Your preparation is going to be perfect in the first half of 18th century because historiographically you are rich now. Actually, although it is a topic of medieval history, whenever you are going to discuss about the decline or disintegration of Mughal Empire, you will just discuss the disintegration of Mughal Empire. So they are the, you can say, different sorts of views. But I will give you the clue. Okay, divide all the views in three categories. One is the role of personalities. A very traditional historiography, Sir Jaduna Sarkar, Sri Ram Sharma. So these scholars like Ishwari, you can say that is Ashirwadi Lal Srivastava, etc. So they were writing the nationalist historiography that was imbued with some imperialist temper as well. The decline of Mughal Empire, of Sir Jaduna Sarkar, the history of Aurangzeb, etc. So such historiography concentrated over the role of personality. It was the religious policy of Aurangzeb, Rajput policy of Aurangzeb, the characterlessness of the Mughal bureaucracy, the Mughal officer class, etc. So they were accountable behind the decline of Mughal Empire. ये तरह की जो हिस्टोग्राफी चलती होगी वो तुम्हारे ग्रैंडफादर के टाइम में भी नहीं, ग्रेट ग्रैंडफादर के टाइम, जिसको फिर रिवाइव करने की कोशिश की जाए. उसके बाद you will come to know in post-independence era from 1950 onwards, with the era of Muhammad Habib, the father of Irfan Habib. So he laid the foundation of the Aligarh School of Historiography, and that was nationalist Marxist in its approach. And starting from the period of Muhammad Habib, then came the era of Professor Nurul Hasan. Satish Chandra was not purely from
Aligarh School of Historiography, but he was having the identical view. For example, of Harvansh Mukhia. He is from JNU. He was not from Aligarh School of Historiography, but even he was having the identical view. He was having a Marxist approach to the interpretation of history. So these scholars have gave the emphasis over the institutional weakness or the crisis in Mughal institution, like Jagirdari crisis, Satish Chandra, agrarian crisis, Professor Irfan Habib, the role of the subversive role of Jamindars, Professor Nurul Hassan, etc. Athar Ali, he has also talked about crisis. ये जो अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी है उसने क्राइसिस की बात की, जो क्राइसिस के कारण मुगल एम्पायर का डिक्लाइन. सो दे वर बेसिकली हैविंग एन एम्पायर सेंट्रिक व्यू कि दिल्ली और आगरा में क्राइसिस आई जिस कारण से मुगल एम्पायर का डिक्लाइन. तो यू कैन आस्क मी द क्वेश्चन कि सर इसमें मॉडर्न हिस्ट्री में हमें क्या लेना देना है? लेना देना है ना, तुम हिस्टोग्राफिकली शार्प हो ही नहीं पाओगे. अब ये जो स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी है ये मातम मना रहा है या मातम पोशी कर रहा है कि आहा हम मुगल एम्पायर के जानने के बाद एक तरह से एज ऑफ क्राइसिस आ गई. Earlier than that, imperialist, you can say some nationalist imperialist historians, Sir Janna Sarkar has coined the term dark age of Indian history. Dark age. Because the Mughal Empire was after all a flourishing empire, and after the disintegration of Mughal Empire, the Maratha brigades became active. They started to carry the plunders, and he carried the, you can say, the loot and plunder in the different parts of Indian subcontinent. So there was complete anarchy. There was the, you can say, complete political upheavals. So once again the peace and order had to return in India under Pax Britannica, under the British Empire. Do you understand my point? तो डार्क एज वाले को किया. तो अब मैं स्टूडेंट दिक्कतें ये आएंगी कि आपको पता नहीं चलेगा, बड़े आराम से क्वेश्चन सेटर क्वेश्चन डाल देंगे कि द मुगल एम्पायर, द you can say in the first half of 18th century was plagued by crisis and decline. How far do you agree with this statement? तो अगर तुम बोलते हो हाँ क्राइसिस के कारण ऐसा हुआ, तो तुम इस लाइन ऑफ हिस्टोग्राफी को तुम सपोर्ट करोगे जो अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी. बट दिस लाइन ऑफ हिस्टोग्राफी हैज बीन ओल्ड फैशन्ड, and the new line of historiography is the secular product of regional prosperity. इसने कहा कि no, don't pay attention to the empire centric view. You don't appear to be attentive. You are slightly restless. What problem? कूलिंग ज्यादा हो रही, थोड़ा सा इसी के बीनीथ थोड़ा सा आगे पीछे खिसक के बैठा करो. डायरेक्ट उधर काम तुम करो. The problem is here. They are comfortable. They have made a compromise with this sort of cooling. Are you okay? अभी बोलेंगे. खरबूजे को देख कहीं खरबूजा रंग का कर. तुम लोग मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं? ये लाइन जिस दिन तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग में ये बातें घुस जाएंगी और तुमने अगर इस बेसिस पर राइटिंग करना शुरू कर दिया यूपीएससी एग्जाम में, तो यू कैन बी अ टॉपर इन योर सब्जेक्ट, क्योंकि ये टच मिल ही नहीं पाता. और मैं स्टूडेंट्स को टॉर्च लेके खोजता हूं कि आ जा कोई क्वालिटी का बच्चा जो मैं तुमको इस लाइन ऑफ स्टडी में पारंगत कर. तो लोग स्टोरी इवेंट्स, दे आर जस्ट एब्जॉर्बिंग देयर टाइम, दे आर स्ट्रगलिंग विद द इंफॉर्मेशन. अरे स्ट्रगल क्यों कर रहे हो इंफॉर्मेशन से? हम तुमको ऐसे ही इतना इंफॉर्मेशन दिमाग में डाल देंगे कि सामने वाला सरप्राइज हो जाएगा कि इतना इंफॉर्मेशन तुमको याद कैसे हो. और उसके लिए यू हैव टू डू नथिंग, सिंपली यू हैव टू मेक ए सिस्टमेटिक स्टडी.
So the product of prosperity of at regional level. What is the theory? A theory is कि actually why decline? It is true that the Mughal Empire was running short of finance due to its own internal region. But India was getting prosperous at regional level because there was the influx of precious metal due to the role of European companies. And it was the time in association with European companies, the different sorts of cash crops like tobacco, like you can say cotton was already in India, but it became more, now there was more emphasis over the production of cotton, although it was, but European companies brought maize, tobacco, potatoes, red chilies, different sorts of horticulture, cashew nuts, etc. So due to the cash crops, there was more production in agriculture, monetization of economy at lower level, and there was some sort of alliance between the revenue farmers, the regional, you can say jamindars, jagirdars, and the regional money lenders as well as the merchants. So at regional level like Bareilly, Badaयूं, Farrukhabad, Bengal, etc. So there was the rise of some prosperous region. So once the rise in the prosperous region, so now the local patriarchs planned you have to make a revolt against the Mughal Empire so that you will be free from the pressure of Mughal Empire and the prosperity of the region has to be eaten away by us. You will not allow this prosperity and this sort of the resources to reach up to the Mughal Empire. So it was the regional prosperity which made the regional patriarchs ambitious to make a revolt against the Mughal Empire. तो भाई ये क्राइसिस नहीं था, ये प्रॉस्पेरिटी था जिसने मुगल एम्पायर को निगल लिया. तो अगर ये लाइन ऑफ हिस्टोग्राफी करेक्ट है तो तुमको 18th सेंचुरी का फर्स्ट हाफ को मानना पड़ेगा कि इट वाज अ प्री मॉडर्न एज, क्योंकि जो रीजनल स्टेट्स हैं वो बहुत अच्छे ढंग से इकोनॉमी को मैनेज कर रहे थे, रीजनल स्केल पर बेहतर लॉ एंड ऑर्डर को एस्टेब्लिश कर रहे थे, और वैसे भी जो पहले का टाइम था, अर्लियर टाइम, so during in the old historiography, empire was supposed to be the sign of progress and the regionalization was supposed to be the sign of decline. But with growing democratization in India, now it is widely believed that no, regional state is also not a declining factor, but if the regional state can provide the better administrative, could maintain the better administrative efficiency at regional level, and it can patronize the regional art, regional culture, regional economy in a better manner. It can, you can say, assimilate the things in the better manner. तो अब माना जाता है कि नहीं भाई, ऐसा नहीं है कि एम्पायर डिक्लाइन का साइन है और रीजनल स्टेट्स प्रॉस्पेरिटी का साइन. तो अब इसको प्री मॉडर्न, अब इसको न एज ऑफ क्राइसिस बोला जाता है, न डार्क एज बोला जाता है. दिस इज कैरेक्टराइज एज द एज ऑफ, you can say, the pre-modern age. और जब ये प्री मॉडर्न एज होगा तो फिर पलासी का जो मतलब डाइफिकेशन है सरजन्ना सरकार वगैरह जैसे कि बैटल ऑफ पलासी के साथ मॉडर्न एज स्टार्ट हुआ, यह थियरी है चैलेंज होनी शुरू हो जाती. कुछ 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 दिमाग में जा रहा. तो यहाँ तुम्हारा इंफॉर्मेशन हो गया बच्चे, यहाँ तुम्हारी एनालिसिस हो गई. 18th सेंचुरी के फर्स्ट हाफ में ना तुम्हें प्रीलिम्स में प्रॉब्लम होगा, न इंफॉर्मेशंस की कमी होगी, नॉट विल यू लैक इन एनी क्वेश्चन ऑन द एनालिटिकल क्वेश्चन. यू कैन से जैसे दे विल आस्क यू, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट कि द मिड 18th century was basically, during the mid 18th century India was marked by political fragmentation and economic decline. Discuss. They will ask you the question
कि डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट कि इन द मिड 18th सेंचुरी द इंडिया इज मार्क्ड बाय पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन एंड इकोनॉमिक डिक्लाइन? नहीं, पॉलिटिकल फ्रेगमेंटेशन भी तुमको नेगेटिव सेंस में नहीं देना है। फ्रेगमेंटेशन नेगेटिव चीज है ना। तुम ये कहोगे कि इट वाज द, नहीं, इट वाज द रीजनलाइजेशन। The Mughal Empire, they were just emerging at the regional level, the regional pattern of Nizam, Murshid Quli Khan in Bengal, Shadat Khan in Awadh. They provided the very good governance in their respective regions. अब तुमको कहीं से क्वेश्चन फॉर्म कर दे कि हाउ फार डू यू एग्री विद द स्टेट, will you, how far is it justified to characterize these regional states as successor states? In 2020 में पूछा था रीजनल स्टेट्स एज द सक्सेसर स्टेट्स। अब बच्चे उसी में चक्कर खा जाते हैं कि यार रीजनल स्टेट सक्सेसर स्टेट नहीं है तो क्या है, तो हम क्या करें? तो करिए ना, आप उसको बताइए कि सक्सेसर स्टेट्स उस रूप में नहीं थे कि मुगल स्टेट के कार्बन कॉपी थे। इन्होंने मुगल स्टेट से बहुत सारी चीजों को चेंज करके अपनी इफिशियंसी बढ़ा ली थी, तो ये विशुद्ध सक्सेसर नहीं रह गए थे। दे मोल्डेड देयर मॉडल, तो हिस्टोग्राफिकल आपको काफी रिच बनाते। एनीवे, देन second half of 18th century. Advent of European companies, in India. Portuguese company, Dutch company, British East India Company, British East India Company, French company, Up one by one you have to, you can say you have to find out and you have to give focus over the important European companies which came to India, and here you will give focus over the main centers. In main centers their factory sites were there, so that is give you the enough facts whether the Dutch company were, the British company were, the French company. But my friends, you are supposed to have some basic idea ki why did European company come to India. Sometimes they can ask you the question ki was it the discovery of the new route which make European companies come to India? Discuss this aspect or discuss this statement. तो तुम यहाँ पर रूट की खोज में ही केवल आए, यही अपने आप में बड़ी बात नहीं थी।
वो तो रूट तो एक फैक्टर था। यूरोप में जो प्रॉस्पेरिटी आ रही थी, एक क्लास ऑफ पीपुल का इमर्जेंस हो रहा था, and this class of people were searching for luxury goods and oriental luxury goods, which made the companies to discover the new routes. And not simply that, even the spirit of renovation and reformation guided the European people to move towards the different parts of the world. तो क्या होता है कि अगर तुम क्रिटिकल थिंकिंग तुम्हारी स्ट्रांग होती है, so anyhow they are going to ask you the question, you can do justice to the question from this side, from that side. I just want to train you in this direction. तुम केवल अपना एक वर्केबल लैंग्वेज की गारंटी दो। वर्केबल लैंग्वेज का मतलब आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू टू राइट इन ऑर्नामेंटल लैंग्वेज, सिंपली दैट्स विद द फ्लो ऑफ लैंग्वेज। You should select the right words. Grammatically, you are not committing mistake in your writing, etc., etc. Then the rest of the things I will just generalize. अब इसमें यूपीएससी पर हमें भरोसा नहीं हो सकता है कि पोर्चुगीज कंपनी व्हाई डिड नॉट कमिंग अर्लियर, बट पोर्चुगीज कंपनी बट डिडंट and failed to create a state in failed to create some political domain in India, एग्जामिन द स्टेटमेंट। अब ऐसे भी पूछ देंगे तो कोई बात नहीं, जब हम लोग पोर्चुगीज कंपनी कर रहे होंगे तो उसके सारे प्रोज एंड कॉन्स देखेंगे, भाई इन्होंने गलती क्या क्या की, व्हाट वर देयर वीकनेस, किस तरह से दे हैव डाइवर्टेड फ्रॉम देयर मेन कोर्स ऑफ द ट्रेड, दे स्टार्टेड टू collect the revenue in the sea, Carthage system. They were much interested in the spread of, or they became dogmatic and started spreading religions who antagonized the Indian powers. And apart from that, it was a feudal state, Portugal. So the Portuguese state could not give the sufficient support to the Portuguese company, as you find in case of the British and the Dutch company. So in this way, you can deal with the Portuguese, then Dutch. Then you have to discuss about Carnatic War. Carnatic War. अब suppose they will ask you, okay, in Carnatic War, it was not the French company, it was not the defeat of the French company, it was the defeat of the French Empire. Analyze. 7 Years War. Are you correlating it? Good. यूरोप में 7 year war चल रहा था. Actually, it was the rivalry between. In fact, 7 years war was a mini world war, and Carnatic War, the third Carnatic war was the part of it. And it was the part of it, you will come to know. So it was the final battle between the British and the French power in order to have the dominance over the colonial empire of the world. So French were the final loser. French empire lost India in Asia and Canada in America. So it was not simply a defeat of French company, but it was defeat of the French empire. अब इसमें तुमसे क्वेश्चन पूछ देंगे 5 to 6 फैक्टर्स है फ्रेंच के डिफीट का, तो कोई एक फैक्टर लेकर पूछ देंगे कि was it the commercial success of the British or the failure on the front of the mercantile front that French lagged behind the British in this Carnatic War. एग्जाम तो कोई एक फैक्टर लेकर पूछ देंगे, तो एक फैक्टर लेके पूछने पर आई विल सजेस्ट यू कि इन दैट केस you have to mention about some other factors as well, although it was definitely an important factors, but even more than one factors were accountable behind that, this that factor, and that question is over. After Carnatic War, then they will deal with Battle of Plassey. Battle of Plassey. The Battle of Plassey
and the Battle of Buxar. Battle of Buxar. And it is here you can say, you will just understand and you have to find out how did British company turn from a mercantile company to a political power in India. But my friends, we have just dealt with the Carnatic War. In Carnatic War, there is the one more question, historiographically. Okay, there is the statement of some French scholar that Dupleix has definitely committed a major mistake through making its base at Madras. And Dupleix has tried to find out the key of India at Madras and he failed. And Robert Clive discovered this key in Bengal and he got success. Comment. Definitely you can say this is an historiographical issue which I will deal with in the regular class. कि भाई क्या वास्तव में डुप्ले ने इंडिया की चाबी मद्रास में खोज कर गलती की, क्लाइव ने इसे बंगाल में खोजा और सक्सेस लिया. अब खैर चलो बैटल ऑफ पलासी और बैटल ऑफ बक्सर में तो बहुत सारा हिस्टोग्राफिकल इशू. अब बैटल ऑफ पलासी में इसी बात पूछा है तुम लोगों से, व्हाट आई थिंक there was a question, after the battle of Palasi the mercenary became the kingmaker. After the battle of Palasi mercenary became the kingmaker. तो थोड़ा इसमें हम लोग क्या करते हैं पता है, अगर मान लो खाना टेस्टी ना रहे तो थोड़ा सा उसमें कुछ मिर्च मसाले मिलाकर, हालांकि हम मिर्च मसाले खाते नहीं इसलिए इंस्टेंस देना उचित नहीं, मैं तुम लोगों के कंटेक्स्ट में दे रहा हूं, थोड़ा उसको स्पाइसी बना के चटकारा बना देते. सो द सेम हैपेंस इन कोर्स ऑफ द क्वेश्चन. हम सिर्फ लिखेंगे हाँ ठीक है, हाँ जो कहना था आपने तो कह डाला कि एक कंपनी किंग मेकर हो गई, तो ठीक है किंग मेकर हो गई तो हो गई, हम क्या करें. तो कोई ना कोई कंटेक्स्ट से जोड़ के उसको स्पाइसी बना. एंड सो फार एज यू आर नॉट गोइंग टू बी थिंकिंग क्रिएचर कंटेक्स्ट से जोड़ ही नहीं पाओगे. भाई मैं क्या करूं, मतलब एक मर्सेंडी हैज बिकम अ किंग मेकर, तो इसको हम किस कंटेक्स्ट से जोड़े, तो दो कंटेक्स्ट से जोड़ लेंगे. Mercedes became a kingmaker, but it was not a fair play. The fate of or the final judgment of this battle was decided outside of the battlefield itself. The final judgment of the battle has been decided outside the battlefield itself. And it was here you can say there is a Bengali scholar, his name is Biplab Das Gupta. He has compared the Battle of Palasi with Indian cricket match fixing, in which the result of the match is pre-decided. So happens in case of the Battle of Palasi. This is the one dimension we have to mention. Second one dimension has been given by William Dalrymple. There started a loot. Loot term in English dictionary came from Bengal. And a British company, a mercenary, which became the kingmaker and which was operating what you know as the court of directors, that was operating from London in 5-roomed house, and it was controlling the largest empire of India, the largest empire of the world. That was the Indian empire. अब कहोगे चाइनीज एम्पायर was larger than Indian empire, और रशिया तो गुलाम हुआ नहीं, इंडिया से बड़ा था. अब ठीक चाइना हमसे बड़ा था, लेकिन चाइना was being ruled by 5 to 6 powers, but in India there was a single one British dominance. So in this way, we have to link the things from the different dimensions here, and all the informations will automatically come to your mind. After the Battle of Buxar, you have heard about the Diwani of Bengal.
So now the question here arises कि after Diwani of Bengal we come to know कि earlier the अब देखो when European companies came to India, so European companies were much enthusiastic for carrying trade in India. But unfortunately, my students, European companies were enthusiastic for carrying trade. But unfortunately, they could not. Because their trade relationship with India was one-sided. On the one hand, there was much demand of Indian products in Europe, but no demand of European products in India. So it was the one-sided trade. So if they had to purchase the Indian products, to how to finance the Indian trade? So do you know they preferred precious metal, and they used to provide the precious metal to make purchase of Indian products. So it was the precious metal which were coming from America via Britain, and that was being influxed in India. But once they got the Diwani of Bengal, so now they started to collect the revenue from Bengal, and a part of revenue was spent over purchase of Indian products. Okay, so now they severely sliced down or sharply sliced down the import of precious metal from Britain. So it is here the phenomena of drain of wealth started, and up to this period, India was having the mercantile relationship with Britain, but it is after the battle of Plassey and Buxar, they developed a colonial relation for the first time. जैसे मैंने कहा कि पहली बार colonial relation कायम हुआ, तो colonial relationship का क्या मीनिंग है आपकी समझ में आया? कौन कौन बताएगा कि भाई बैटल ऑफ बक्सर के बाद जो दीवानी ऑफ बंगाल हुआ तो कॉलोनियल रिलेशन कायम हुआ? व्हाट डू मीन बाय कॉलोनियल रिलेशन? कौन कौन बताएंगे? तुम लोग तो बेसिक चीज को ही नहीं समझ रहे हो, तुम लोग को हिस्टोग्राफी में क्या समझा, हिस्टोग्राफी का लाइन क्या समझा? ये सब तो एनसीईआरटी की बात, एंड इट इज नॉट सिंपली ट्रू ऑफ यू पीपल, दिस इज यूनिवर्सली ट्रू कि स्टूडेंट्स आर प्रिपेयरिंग द सब्जेक्ट्स, लेकिन बेसिक ट्विस्ट एंड टर्न ही सब्जेक्ट का नहीं समझते, और बेसिक ट्विस्ट एंड टर्न नहीं समझने पर आई थिंक कि नॉट टू स्पीक ऑफ डू द स्टैंडर्ड राइटिंग ऑफ क्वेश्चन। मैंने एक सीधा सा सवाल किया, एंड इफ एवरीबॉडी जस्ट अंडरस्टैंड दिस माय क्वेश्चन क्लियरली, कि बिफोर द बैटल ऑफ बक्सर the British company was purchasing the Indian products, in return they were giving the precious metal। ऐसा तो हमारे इंटरेस्ट में था, भाई हम चाहेंगे ठीक है हमारा प्रोडक्ट्स है, हम स्पाइसेस है, इंडिगो है, कॉटन है, आप खरीदो और हमें पैसे दो, यू विल बी प्रॉस्पेरस। अब उन्होंने क्या किया कि प्रोडक्ट्स तो जरूर परचेज करते थे, लेकिन अपन को पैसे नहीं देते थे, और जो प्रेशियस मेटल वो ब्रिटेन से लाए, वो लाना उन्होंने बंद कर दिया लगभग। तो हमारा रिलेशनशिप अब हो गया, पहले हमारा मर्केंटाइल रिलेशन था, अब हो गया कॉलोनियल। तो मैंने सीधा सा सवाल किया, माय क्लियर क्वेश्चन इज कि व्हाट डू मीन बाय दिस कॉलोनियल रिलेशन? या they may get profit even earlier. Through trade also they were getting profit. This is the phenomenon of drain of wealth you are mentioning. But my question is कि what is colonial relation? दीवानी राइट्स मिलने के बाद उन्होंने ट्रेड को रेगुलेट करना शुरू कर दिया। उन्होंने
जो ट्रेडिंग राइट थे, अब पहले क्या होता था, वहाँ से प्रीशियस मेटल्स आते थे, यहाँ से ट्रेड होता था, बट अब इन्होंने यहाँ से रॉ मटेरियल्स लेके जाने स्टार्ट कर दिए, उसके बदले लेके आते थे गुड्स को। वो यहाँ से ओपियम का ट्रेड होता था, ओपियम का ट्रेड कराते थे चाइना के अंदर, फिर वहाँ से जो प्रीशियस मेटल्स उन्हें मिलते थे अपने पास रखते थे उन्हें। तो ऐसे उन्होंने एक सर्कल बना दिया ट्रेड का। देखो, all are trying and you people are not wrong exactly, because you people are talking the phenomena of drain of wealth and exploitation of India. But I am just asking you what is colonial relationship. So you have to given the apt reply, and apt reply is that if one country just comes to control and overpower the other and uses and exploiting its resources for its own benefit, then it is colonial relation. One country controls the other and starts exploiting resources for its own profit, own benefit, that is colonial. इसे हम colonial relation कहते हैं, that is colonial relation. तो बैटल ऑफ बक्सर के बाद अब आ गया colonial relation. अब यानी in the battle of Plassey, in the battle of Buxar, there is the historiographical question as well. What is historiographical issue? There is some statement by some scholar, that is Naveen Chand Rai, a Bengali scholar, whatever. He has given the statement with the battle of Plassey, there started the era of eternal darkness in India. So there is some counter view कि battle of Plassey was not a decisive battle, because there is some statement by some scholar कि battle of Plassey was not a decisive battle. After the battle of Plassey, the British might have lost any battle. They might have been deprived from the benefit of the battle of Plassey. So it was the battle of Buxar which was truly decisive. Critically examine the statement. मतलब कहोगे भाई ये तो आंसर से बड़ा क्वेश्चन ही हो गया, कभी कभी यूपीएससी ऐसा करता है. जैसे स्टेटमेंट ये है कि बैटल ऑफ पलासी कोई डिसिसिव बैटल नहीं था. अगर बैटल ऑफ पलासी के बाद ब्रिटिश कोई भी बैटल हार गए होते तो वह उन लाभों से वंचित हो गए होते जो उन्होंने बैटल ऑफ पलासी से प्राप्त किया था. इसलिए बैटल ऑफ बक्सर वो डिसिसिव है, और इस स्टेटमेंट को आप क्रिटिकली एनालाइज करिए. तो आपका जवाब क्या होगा कि जो कहना था वो तो आपने खुद कह दिया, अब मेरे लिए छोड़ा क्या? आपके लिए कोई छोड़ा है? विल यू रेस्पॉन्ड टू दिस क्वेश्चन? कैसे रिस्पॉन्ड करो? ये तो तुम वही बात करो, वही तो वो भी करें. वो तो वही करें कि भैया एक कॉन्स्पिरेसी था, इट वाज नॉट अ फेयरली फॉट बैटल. So if British might have lost any battle after the Battle of Plassey, they might have lost the benefit they got from the Battle of Plassey. So they themselves promoting this idea. So Battle of Buxar is the true battle. They are themselves asking, and आपको critically analyze करने के लिए कह रहा है, तो आप इसमें कुछ input डालने की स्थिति में हो. देखो, I'll deal with this question in the class, and once I will just देखो तुमको मैं हिस्टोग्राफी का इंसाइट दे दूंगा,
उसके बाद क्वेश्चन चाहे वो कितना भी कॉम्प्लिकेटेड बना के पूछेंगे, कोई ना कोई रास्ता तुम निकाल लोगे। हाँ, यस। पहले क्या कहा, एक बार और रिपीट करो तो। हम्म। देखो, so far how many answers I have received, you have given the most logical answer to that, although you are lacking in examples here or lacking the current of historiography, but at least you have felt it from the bottom of your heart कि the battle of Plassey should not be undermined. एक्चुअली देखो, दो अलग अलग लाइन ऑफ हिस्टोग्राफी है। एक तरफ बंगाली हिस्टोरियंस, वो कुछ ओवर एस्टिमेट करते हैं बैटल ऑफ पलासी के इम्पैक्ट। वो कहते हैं कि देयर स्टार्टेड एन इटर्नल एरा, द एरा ऑफ इटर्नल डार्कनेस इन इंडिया। इटर्नल डार्कनेस, वो डार्कनेस दूसरी है। वो जो डार्क एज हमने फर्स्ट हाफ ऑफ 18th सेंचुरी को कहा है, वो एक अलग चीज हुई, उसको इससे लिंक मत करें। ये दूसरी तरह का डार्कनेस। ये डार्कनेस का मतलब हुआ कि उनका कहना है यूरोप में, दिस टर्म the term the dark age has been coined in Europe for the medieval age. Actually, whenever there was the decline of Roman Empire and era of feudalism started in Europe, so that was characterized dark age traditionally. But even in Europe, this view has been rejected now. So here the point is the eternal darkness. इसमें कुछ क्रिटिक्स ने कहा कि ये बंगाली सब नेशनलिज्म है, ये बहुत ज्यादा मतलब बंगाल सेंट्रिक व्यू है कि अगर बंगाल गया तो पूरी इंडिया चली गई, मतलब यू आर ओवर एस्टिमेटिंग द थिंग्स, मतलब ये कहना है जो इसको क्रिटिसाइज करते हैं। इफ समवन इज कमिंग फ्रॉम बंगाल, डोंट टेक इट अदरवाइज प्लीज। उनका कहना है कि भाई जो बंगाली सब नेशनलिज्म है, जो बंगाली लोग हैं वो बंगाल को थोड़ा ज्यादा सेंट्रिक अपना व्यू दे रहे हैं कि बंगाल ही इंडिया है, जबकि एक छोटे से कॉर्नर में वो जीता था। अभी मराठा पावरफुल हैं, अभी हैदर अली उनको छक्के छुड़ाने के लिए काफी है ना, अभी निजाम भी पावरफुल है। सो देयर वेर मेनी पावरफुल फोर्सेस टू बी रेकॉन्ड विथ इन इंडिया। सो व्हाई आर यू आर सिंपली टेकिंग द केस ऑफ बंगाल? व्हाट अबाउट हैदराबाद, अदर स्टेट्स? तो यह जो स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट को कुछ स्कॉलर्स ने काउंटर कहा कि बैटल ऑफ पलासी कुछ है ही नहीं भाई, ये तो धोखे से जीता गया है। ब्रिटिश एक भी बैटल लूज करते तो वो बेनिफिट से चले जाते। तो बीच का बैलेंस वही लिया गया है जो तुमने कहा है, वही हिस्टोरियंस बैलेंस लेते हैं कि इट इज ट्रू कि बैटल ऑफ पलासी वाज फॉट विथ, यू कैन से, ट्रिचरी, एंड इट वाज won through betrayal. It was the great story of betrayal. It is true, but it is equally true once the British came to control Bengal after the Battle of Plassey, so for the 7 long years, it got so many resources and such benefit from Bengal, which enabled the British company to win the Battle of Buxar easily against Indian power. Do you understand this point or not? So we cannot undermine the role of Battle of Plassey. जितने भी क्वेश्चन मैंने तुमको कहा है, सब पूछे हुए हैं यूपीएससी। 2014 का क्वेश्चन उलट के देखो यूपीएससी बैंक में, तुम तो क्वेश्चन बैंक भी नहीं देखते हो। किस दुनिया में रहते हो, कहाँ रहते हो, कहाँ हो, क्या सोच रहे हो? लगता है कोई सेवियर आ जाएगा, कोई मिरेकल आ जाएगा, हम पेपर लिख देंगे। तुम चीजों को समझो।
तुम चैलेंज दे के क्वालिफाई कर सकते हो. You are having the ability to do that कि I will qualify. You can assure your parents, you can assure your nearest कि भाई लोग ढंग से नहीं पढ़ रहे इसलिए यूपीएससी नहीं हो रहा. हम ढंग से पढ़ेंगे, हम क्वालिफाई करेंगे, हम पेपर लिखेंगे, एग्जामिनर विल बी कंपेल्ड टू गिव द मार्क्स. हमारा पेपर इतना स्टैंडर्ड होगा, मार्क्स देंगे, हम सिलेक्ट होंगे. हाँ, इसमें क्वेश्चनिंग हो सकती है कि हमारा 20th पोजीशन होगा या 80th पोजीशन होगा, लेकिन सिलेक्ट होंगे इसमें कोई डाउट नहीं, क्योंकि वो सब चीजें डिपेंड करती है इंटरव्यू में क्या होता है. और लेकिन इफ यू हैव गेन्ड द स्टैंडर्ड, यू विल नॉट बी डिप्राइव्ड फ्रॉम यूपीएससी. अगर कोई बाहर हो रहा है तो इसका तो स्टैंडर्ड नहीं अचीव हुआ है. आई एम वेरी सॉरी टू इन्फॉर्म. उस लेवल की पढ़ाई चाहिए. तो नेक्स्ट वन, अब आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर you have come to part 2, that is colonialism. Colonialism, that is the part 2. Even it can be divided in 3 subparts. Subparts. Subpart 1, mercantile phase of colonialism. Subpart 2, industrial phase of colonialism. Subpart 3, financial phase of colonialism. Financial phase of colonialism. ओके, अब पूरी एरा हम लोग कॉलोनियलिज्म का स्टडी करेंगे. इसी में तुम लोगों के पूरे चेंजेस की समझ कॉलोनियलिज्म की हो जाएगी. देखो, ये डिवीजन है, जनरल स्टडीज वाले को भी इसी तरह डिवाइड करके पढ़ना चाहिए. फर्क क्या है कि ऑप्शनल वाले को वर्टिकल डिप मारना होगा और प्लस हिस्टोग्राफी का नॉलेज डेवलप करना होगा. जीएस वाले बस हॉरिजॉन्टली देखते हुए निकल जाए, उनका गोटी लाल है. लेकिन डिवीजन यही मांगता है. जो ट्रेडिशनली डिवाइड इंट्रोड्यूशन का रिपोर्ट दिया, उसको कुछ कनेक्टिविटी याद नहीं रहेगी. देखो इसमें कनेक्टिविटी कैसे बनेगा. अब हम आते हैं फर्स्ट सब पार्ट पर. सब पार्ट फर्स्ट, डायग्राम. colonialism
mercantile fees. Objective: maximize the collection of maximize the collection of revenue so that a substantial part of revenue could be invested in trade. A substantial part of revenue could be invested in trade. Political policy. Political policy. The policy of ring fence. The policy of ring fence. Policy of ring fence. Policy of ring fence, i.e., to encircle enemy states through friendly states. Through friendly states. Administrative policy. Administrative policy. Administrative policy to continue with Mughal administrative structure
structure with certain modification. Certain modification. Third, economic policy uh, origin of drain of wealth. Origin of drain of wealth. Drain of wealth and exploitation of Indian artisans. Exploitation of Indian artisans. Social policy. Social policy to maintain traditional social structure. To maintain traditional social structure. Cultural policy. Cultural policy to promote Orientalist ideas. Orientalist ideas. एक चीज मर्केंटिलिस्ट फेज यहाँ पर जो दिया ना, एक चीज मिसिंग है here to even mention 1757 to 1813. 1757 to 1813, and then this one, political policy, the policy of ring fence I to encircle enemy states through friendly states. Administrative policy continue with Mughal administrative structure with certain modification. Economic policy origin of drain of wealth and exploitation of Indian artisans, and social policy to maintain traditional social structure, and cultural policy to promote Orientalist ideas. देखो इसका कुछ मतलब समझा? You understand the meaning? देखो ये चेंजेज ही सिर्फ नहीं, changes मैंने तुमको ancient में भी I have just imparted about the change. Even in medieval history I have imparted about the change. But that is a very special type of change.
Here the part 2 is colonialism, and there is a Western scholar, his name was Farwak. Sorry, not Farwak, Farnibal. Farnibal his name. So he has give a new interpretation of colonialism. According to him, colonialism is basically an economic relation, but it was going to affect political, social and cultural structure as well. तो अब क्या है कि आपकी जो पॉलिसी है, तो हमने हिस्ट्री को एकदम कॉलोनियल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें 3 पार्ट में डिवाइड करना है. पहला पार्ट, द फर्स्ट पार्ट इज मर्केंटाइल फेज, द सेकेंड पार्ट इज इंडस्ट्रियल फेज, and third part is financial phase. So the first part will cover history from 1757, means ki the Battle of Plassey, to 1813, because 1813 is the landmark year. Then the second page is associated with starting from 1813 and reaching up to 1858, that is another landmark. And then starting from 1858 till 1947, that is the third landmark, and that is financial phase. Okay. My students, here I have to make you clear. I have drawn a diagram. Whenever I have drawn a diagram, here I have mentioned about 3 phases. First one phase, that is called colonialism, that is mercantile phase. So this is mercantile phase, obviously you can see, but as colonialism is basically an economic relation, basically, so it was going to affect the political structure, social structure and cultural structure as well. इस फेज में ब्रिटिश का कॉलोनियल ऑब्जेक्टिव है कि वह इंडिया से ज्यादा मैक्सिमाइजेशन ऑफ कलेक्शन करे रेवेन्यू का. तो मैक्सिमाइजेशन ऑफ जब वो कलेक्शन करेगा रेवेन्यू का, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू हम ट्रेड में इन्वेस्टमेंट कर सके. तो व्हाट डू मीन बाय इन्वेस्टमेंट इन ट्रेड? तो थ्रू द रेवेन्यू दे वुड परचेज Indian products, more and more Indian products that could be sold to Britain or Europe, and then the company would reap the profit. My friends, if they had to maximize the investment in trade, so simply collection of revenue is not enough, but even saving of revenue is also equally essential. So that's why their political policy, social policy, cultural policy, all are more or less, or you can say largely guided by this objective. हालांकि मैं आपको बताऊं कि अगर कोई जीएस कर रहा है तो केवल इकोनॉमिक कॉलोनियल लेके आगे निकल जाए, उसका काम हो गया. लेकिन अगर वो ऑप्शनल कर रहा है तो उसमें 2 फैक्टर को और ऐड करना पड़ेगा, बिकॉज हियर यू नीड टू हैव द वाइडर नॉलेज. जैसे हम 60% मार्क्स हमने दे दिया कॉलोनियल ऑब्जेक्टिव, सॉरी मतलब कॉलोनियल इंटरेस्ट को, और 20% मार्क्स दे दिया रोल ऑफ आइडियोलॉजी को, क्योंकि वह उसका भी अपना एक इम्पैक्ट होता है. एंड 20% मार्क्स हमने दे दिया द इम्पैक्ट ऑफ पर्सनालिटी को. जैसे कोई पॉलिसी जो डिसाइड होती है, तो ब्रिटिश इंडिया में जो पॉलिसी डिसाइड करते हैं, तो ब्रिटिश अगर इंडिया में मुस्कुराए भी, ब्रिटिश स्माइल इन इंडिया, is their smile was having some colonial objective. Okay.
और कॉलोनियल ऑब्जेक्टिव जब उनका जैसा ऑब्जेक्टिव होगा वैसा पॉलिसी चेंज होगा। लेकिन अगर हम थोड़ा डीपर जाते तो आप सोशल साइंस पढ़ते हो ना, तो मैंने सोशल साइंस में आपको हमेशा ट्रेन किया है कि क्या किसी चीज का केवल एक फैक्टर होता है। जब सोशल साइंस में आप इंटरप्रिटेशन करते हो तो ऑलवेज यू आर डूइंग इंटरप्रिटेशन एंड मोर देन वन फैक्टर इज मेंशन्ड। तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं? तुम्हारे साइलेंस को मैं रजामंदी मानूं कि तुम लोग समझ रहे हो? तो थोड़ा स्टैंडर्ड राइटिंग के लिए क्या करना होता है, इफ वी आर जस्ट गोइंग टू सिंगल हैंडेड कॉज, इट मीन्स यू आर गोइंग टू बी पैरोकियल इन आवर अप्रोच। हम लोग करते हैं कि ब्रिटिश स्कॉलर से ये पूछा जाता है कि भाई आपने पॉलिसी क्यों लाई, तो कहते हैं आइडियोलॉजी के खातिर। हम लोग कहते हैं झूठ बोल रहे, आइडियोलॉजी के खातिर तुम नहीं लाए, तुम्हारा इंटेंट अच्छा नहीं था, तुम कॉलोनियल इंटरेस्ट के लिए लाए। तो हम अगर 100% कॉलोनियल इंटरेस्ट बोलते हैं, वो 100% आइडियोलॉजी बोलते हैं, अंत में हम कॉम्प्रोमाइज करते हैं, चल यार 60% तुम्हारा कॉलोनियल इंटरेस्ट है, तुम इंसान हो तो थोड़ी आइडियोलॉजी तो होगी ही। अब जैसे सपोज यू कैन से you are working in a system as an officer, you can say you are selected as an IN officer, your IS officer, you are going in your district to work. You have to work within a system. You are having the limitations, your power is defined, your functions are defined, your role is defined, you cannot go beyond your jurisdiction. क्या चले जाओगे? But in spite of that, your ideology will influence your work. जब पुलिस डिप्लॉयमेंट की बात होगी तो तुम्हारा जो शुरू में स्टूडेंट लाइफ में मेमोरी रहेगा कि सबसे ज्यादा गुंडागर्दी यहाँ होती है, पहले पुलिस को यहाँ डिप्लॉय करो। तो तुम्हारा जो पर्सनल परसेप्शन है, समझ रहे हो कि नहीं? अगर किसी हाट बाजार में तुम्हारी पिक पॉकेटिंग हो गई तो पूरे हाट बाजार में तुमको पॉकेट मार ही दिखते। तो तुम्हारी पर्सनल आइडियोलॉजी भी तुम्हारे पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करेगी, तुम्हारा पर्सनालिटी भी करेगा कि तुम पेशेंस ज्यादा है या इम्पेशेंट हो, क्विक डिसीजन लेते हो या थोड़ा लेजी हो डिसीजन मेकिंग में। दैट विल गो आल्सो गोइंग टू अफेक्ट द। तब तो एक आईएएस ऑफिसर आता है तो डिस्ट्रिक्ट चमक जाती है, दूसरा आता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। तो रूल ऑफ पर्सनालिटी को कंप्लीटली डिनाई कर दे, ठीक नहीं है। अगर कॉर्नवालिस आया तो कॉर्नवालिस कॉलोनियल इंटरेस्ट से भी गाइडेड था, बट ही वाज कमिंग फ्रॉम अ लैंडलॉर्ड क्लास इन ब्रिटेन, so he was also guided by his ideology was also having some role. क्या तुम समझ पा रहे हो कि नहीं? हमेशा पॉइंट के चक्कर में तुम रहो, तो थोड़ा एनालिसिस सीखो ना यार। पॉइंट में एक लिमिट से ज्यादा मार्क्स नहीं मिले। जानते हो ऑप्शनल में लिमिट क्या है? 225 से लेकर 280 तक कॉमन, और 280 जब क्रॉस होना शुरू होता है तो ब्रिलियंट स्टूडेंट। 300 300 टू 304 पूरा मार्क्स उलट के देखोगे ना, तो पूरे पूरे पेपर में अगर तुम पूरे सक्सेसफुल स्टूडेंट्स की लिस्ट में देखोगे तो मुश्किल से 20-25 स्टूडेंट निकलेंगे डिफरेंट ऑप्शनल में, मिलाकर 20 भी नहीं जो 300 क्रॉस करें ऑप्शनल, कोई भी ऑप्शनल देखोगे क्या है तो आईएएस है, अमुक ऑप्शनल है, ऑप्शनल का मार्क देखो 251 254 264, और जिसका पुअर मार्क्स रहेगा 200। यार हमको ऑप्शनल में डुबा दिया, ऑप्शनल ने तुमको डुबाया कि तुमने ऑप्शनल को डुबा दिया। तो कोई न्यू आइडियाज नहीं लोगे, और कोई ऑप्शनल इसका अपवाद नहीं। हिस्ट्री में कम एनालिसिस, पॉलिटी में, सोशियोलॉजी
पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में तो अच्छा इंटरप्रिटेशन नहीं हो पाया। हिंदी मीडियम में तो ये सब्जेक्ट डूब गया सिर्फ इसलिए कि देयर वाज नॉट द बिफिटिंग टीचर टू टीच पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। Students could not do at their own. नहीं, तुमने क्या कहा मैं समझा नहीं। कौन? 3 पार्ट में? हाँ हाँ। तो बहुत बात की बात है। देखो, तुम्हारा अपब्रिंगिंग कैसे हुआ है, तुम किस इलाके से आते हो, ऑल मैटर्स। तो इसको रूल ऑफ पर्सनालिटी में रखो ना। कहाँ हम पीछा करें कौन स्कॉटलैंड से आए, कौन वेल्स से आए। रूल ऑफ पर्सनालिटी इज एनफ। तो 3 फैक्टर हमने लिया। 60% कॉलोनियल फैक्टर, 20% आइडियोलॉजिकल फैक्टर, 20% the role of personality that is going to influence all the policy। अब आ जाओ फैक्ट्स के ऊपर। अब हमसे ज्यादा फैक्ट्स किसको याद रहेगा, यानी तुमसे। 1757 से लेकर 1813 तक आए। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर 1765 गए। देयर वाज द अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स, यू नो। So between 1765 to 1767, Robert Clive remained to be the governor. No war has taken place in political policy. So actually, the colonial interest was to maximize the collection of revenue and to invest a substantial part of the revenue in trade. So they tried to avoid the war and avoid the annexation as much as possible, But after all, they had to promote their mercantile interest. So they were compelled to fight the war and to annex some regions. But that was not their choice, their compulsion. Their choice was to avoid the war and to avoid the annexation. फिर भी इन्होंने कितने वॉर लड़े, नंबर 1। नंबर 2 कि इनको चूंकि वॉर को अवॉइड करना था, annexation को अवॉइड करना था, सो दे फॉलोड द पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस कि चलो फ्रेंडली स्टेट्स, एनिमी स्टेट्स को फ्रेंडली स्टेट्स को घेरो। तो इवन द पॉलिसी ऑफ सब्सिडरी अलायंस started by Lord Wellesley was guided by this objective. But still, how many battles they fought, and at the time of which governor generals? So obviously you will just learn all these things। मतलब जितना तुम्हारा फैक्ट्स है, जितना बैटल है। जैसे चलते हैं रॉबर्ट क्लाइव से, तो 1765 से लेकर 67 तक रहा। नो बैटल हैज टेकन प्लेस ड्यूरिंग दिस पीरियड। सो गिव क्रॉस। Come to Wedlist, that was his successor between 1767 to 69. He was governor. During his period, there started first Anglo-Mysore War between Hyder Ali and the Company of Madras, 67 to 69, and this ended with the Treaty of Madras, Treaty of, you can say, Madras. So that ended this war. So this is the first Mysore War. What was the region? What was the position of Hyder Ali? Did he resist against the British or not? What was the consequence of the war? So you will be clear what was the treaty, provision of the treaty, whatever. Then you are moving to Cartier, 1769 to 1772. No war has taken place during his period. So cross. Then came the era of Governor General. The Governor of era ended and came the era of Governor General, because there was the enforcement of Regulating Act of 1773, on the basis of which the Governor of Bengal was given the right to supervise Madras and Bombay as well. So now Governor of Bengal, just you can say, was promoted to the status of Governor General.
So first Governor General was Warren Hastings. Starting from 1772 to 1785, during his period, two wars, the first Anglo-Maratha War and the second Anglo-Mysore War. The events, the you can say incidents, the treaty, all are clear. Then his successor was Lord Cornwallis. Although Lord Cornwallis was known as the Great Reforms, but he was, as a political personality, even he fought a war. That was the third Anglo-Mysore War. His period is 1786 to 1793. In third Anglo-Mysore War, which commenced between 1790 to 92, Tipu Sultan was completely routed and he has to lose half of his region. Then comes, after Lord Cornwallis, then comes the turn of John Soar, 1793 to 98. No war has taken place, the moment. Then comes the turn of John Soar, Lord Wellesley, two wars. The fourth Anglo-Mysore War, the final demise of Tipu. Then the second war, that was known as Second Anglo-Maratha War, which ended with the you can say Treaty of Rajpur Ghat. And then finally you can say that was in here, subsidiary alliance. So Lord Wellesley is over. Then comes the Earl of Minto, starting from 1807 to 1830. तो अर्ल ऑफ मिंटो तक बच्चे तुम आ गए, जिसका मतलब है कि 1813 तक अर्ल ऑफ मिंटो के टाइम में कोई वॉर नहीं। तो अब कोई अगर स्टूडेंट्स ये बोले कि भाई मुझे इंफॉर्मेशन कैसे याद रखें, तो तुम्हारे साथ तो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी आ गया है और एक एक पर ऑप्शनल में क्वेश्चन की संभावना बनती। जैसे हैदर अली और टीपू सुल्तान, तो हैदर अली हैज created an empire and Tipu Sultan lost it critically exam. The statement of Lord Cornwallis: you have very successfully crippled our enemy without making our friends too formidable. That is after third Anglo-Mysore War, Lord Cornwallis. Then you can find the question कि Tipu's short-sightedness resulted into its final demise. Critically examine the statement. Then you can find the question कि the Treaty of Salwai was neither significant nor honorable for the British. Comment. जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि तुमको जितनी वॉर और ट्रीटी है उस पर दिमाग में रेडी रहना पड़ेगा, और रेडी रहने के लिए कुछ करना नहीं है। जब हम लोग पार्ट फर्स्ट करेंगे ये तुमको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, और जितनी ये क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन जो प्रीवियसली पूछे गए हैं वो तो हम कवर कर ही लेंगे, और आगे का आगे तुम कर ही लोगे। क्या इतना प्रीवियसली कर लेंगे, हिस्टोग्राफी का इंसाइट हो जाएगा, तो आगे तुम कर ही लोगे। तो दिस वन, देन यू आर कमिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव। अब यहाँ पर भी बहुत हिस्टोग्राफिकल टच है। वे पुराना जो मुगल स्ट्रक्चर है वही मुगल स्ट्रक्चर कायम रहा। दे डिडंट मेक एनी मेजर यू कैन से चेंज, मतलब कंटिन्यूटी इज द मोर इम्पोर्टेंट देन चेंज। क्योंकि अब इसका भी रिलेशनशिप इससे, अब देखो यहाँ पर मैंने कहा कि आइडियोलॉजी है जो कहती है कम से कम वॉर करो, रोल ऑफ पर्सनालिटी कहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है कि लॉर्ड वेलेस्ली फॉट टू मेनी वॉर्स। क्यों? तो बाय नेचर इंपीरियलिस्टिक था, तो रोल ऑफ पर्सनालिटी वहां आ गया। तो ये मेजर है 60%, बट 20% रोल ऑफ पर्सनालिटी भी आ जाता है। देन यू आर कमिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। सो यू आर कमिंग टू एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर, सो पुलिस सिस्टम, सिविल सर्विसेज, आर्मी, लैंड रेवेन्यू सिस्टम। लैंड रेवेन्यू सिस्टम रिफॉर्म्स अंडर वारेन हेस्टिंग्स, then reformed under Lord Cornwallis. So here you will come to realize कि British didn't pay too much, British company didn't pay too much
didn't take too much interest into administrative reforms. Why? So because their objective was very limited, to maximize the revenue and invest the revenue. So why we have to take too much burden of administrative reforms? But still it had to carry some reforms. तो यहाँ पर भी रोल ऑफ आइडियोलॉजी भी थोड़ा आ जाएगा, रोल ऑफ पर्सनालिटी भी आ जाएगा. जैसे लॉर्ड कॉर्नवालिस कैरीड अ लॉट ऑफ रिफॉर्म्स इन ऑर्डर, बिकॉज लॉर्ड कॉर्नवालिस जिस समय आया उस समय ब्रिटिश कंपनी ऑलरेडी लॉस्ट अमेरिका and it was concentrating over India. So with American War of Independence, the British lost one empire but got another one. तो carried the so many reforms you can say. अब इसमें क्या है कि जो ओल्ड मुगल स्ट्रक्चर है उसको भी बहुत सारे फील्ड में उसी को बना के रखा है. कोई मेजर कोई ऐसी चेंज हुई है, विशेषकर दे वर इंटरेस्टेड इन द रिफॉर्म्स इन लैंड रेवेन्यू सिस्टम बिकॉज दे हैड टू मैक्सिमाइज द रेवेन्यू. And as the judicial system, particularly the civil justice, was deeply associated with the land revenue system, so they also brought some reforms in judicial system, but in the rest of the areas they didn't prefer too much reforms. तो वो उनका एक वीकनेस है. And in economic field, train of wealth started from there. हर्रे और फिटकिरी कुछ लगना नहीं है, हमारे प्रोडक्ट्स को भी ले जा रहे हैं और हमें दे भी नहीं रहे कुछ. So actually what is drain of wealth? To increase the export over import and to transfer the surplus from India to Britain. That is the phenomenon of drain of wealth, and that started from this period. अब देखो कल्चरल, तो कल्चरल ओरिएंटलिज्म कि they took interest in the study of Indian past and culture, Indian model, Indian reforms, Indian ideology. They had to maintain the traditional structure in India because they were not having any interest into bringing the change. They didn't take interest into bringing social reforms, because if they are carrying the social reforms, that would definitely irritate Indians without any substantial return. Those social reforms were not going to benefit the British. The social reforms were not going to benefit the British company at all, commercially or otherwise. But the social reforms might have irritated Indians, and they might have antagonized the Indians against the British company. So they didn't take the risk. Sati was burnt alive and they were the mute spectator. मतलब सती सिस्टम जैसी बुराई को रोकने के लिए कुछ किया नहीं. एंड ओरिएंटलिज्म एक आइडियोलॉजी है. ओरिएंटलिज्म तो देखो ये तो अलग अलग. ओरिएंटलिज्म कहता है कि टेक ए स्पेसिफिक इंटरेस्ट इनटू इंडियन पास्ट एंड कल्चर and to make the serious study of Indian past and the culture. There was the foundation of Asiatic Society of Bengal, etc., etc. तो मेनली हम ये कहना चाहते हैं कि तुम लोग डिसजंक्चर्ड पढ़ते हो और हम इंटीग्रेटेड इसको करते हैं. जितनी तुम्हारी एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी है, जितनी सोशल पॉलिसी है, जितनी कल्चरल पॉलिसी, तो तुम्हारे दिमाग में एक स्ट्रक्चर बनेगा और याद रहे, और तब तुम करोगे इंटेलेक्चुअल फर्मेंटेशन. बौद्धिक जुगाली का सारा मसाला हम देते, तुमको केवल चबाने के लिए बोलते. चबा पाओगे कि नहीं? और उस बाद देखो तुमको जितने भी क्वेश्चन है होने, इसमें सबका जो क्रिटिकल आइडिया है, क्योंकि देखो ऑप्शनल जीएस वाले को भी डिवीजन तो चाहिए यही, लेकिन उनको डेप्थ में जानने की जरूरत नहीं. लेकिन जो ऑप्शनल वाले होते हैं उनको डेप्थ में जानने की, क्योंकि आपको एनी एरिया से क्वेश्चन वो कहीं से भी. ओरिएंटलिज्म they will ask you कि British Orientalism was guided mainly by and Orientalism. The British propagated Orientalism in the British colonial interest. अब इसमें भी देखो हिस्टोग्राफी. हिस्टोग्राफी क्या है? ओरिएंटलिज्म का मतलब ये हुआ
उन्होंने हमारे पास्ट एंड कल्चर का स्टडी किया, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल बनाया, हमारे पुराने टेक्स्ट को खोजा, अर्थशास्त्र भी उन्होंने ही खोजा है, भागवत गीता एंड द डिफरेंट एंशियंट you can say texts were just explored by the British. They translated this text even into English, the Bhagavad Gita, Hitopdesh, Mahabharata and the different sorts of text in Kautilyan Arthashastra. तो जब इन टेक्स्ट को एक्सप्लोर कर रहे थे और उन्होंने हमारे पास्ट और कल्चर के इंटरेस्ट में बड़ी इंटरेस्ट लिया, थोड़ा सा तुम इधर अटेंशन दो, यू आर ए सीरियस स्टूडेंट बट यू आर गेटिंग डाइवर्टेड, व्हाट इज योर प्रॉब्लम, आई डोंट नो, मे बी कि सम प्रॉब्लम में अराइज, बट पे अटेंशन टू इट, क्योंकि अपने क्लास में टोटल तुम से हम वीक में सिर्फ 3 डेज मांगते, वो 3 डेज मेरे नाम कर दो और बाकी सारा दिन तुम लोग ये करो, और फिर तुम देखो तुम्हारा पैराडाइम शिफ्टिंग होती है, तो हमें सेवा का मौका ही नहीं दोगे, सिर्फ एडमिशन लेने से थोड़ा मैं क्वालिफाई करूंगा। मार्केट में कम से कम हमें खुलकर पढ़ाने दो यार, बाकी जगहों पे तुम लोग मस्ती करो, हमारे सामने आकर थोड़ा सीरियसली क्लास को अटेंड करो, क्योंकि अब तमन्ना कुछ और नहीं, अब लेगेसी छोड़ने की तमन्ना, क्योंकि हमारे एज में तो पढ़ाने वाले अब सब मार्केट से रिटायरमेंट ले, लेकिन हम अपना सक्सेसर जब तक नहीं पैदा कर देते तब तक रिटायरमेंट लेंगे तो एक गैप हो जाए, नो वन विल फिल इट अप। अगर कोई सक्सेसर बनना चाहो तो आ सकते हो, बेसिकली नेता है, बीच बीच में नेतागिरी करने निकल जाता है। तो एक्चुअली हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि भाई हमारी पास्ट एंड कल्चर को बड़ा इंटरेस्ट से पढ़ रहे हैं, हमारी अतीत में इतने सारे इंटरेस्ट ले रहे हैं, तो हमारे लिए भला कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, उनका इंटरेस्ट क्या सर रहा है, हमारे पास्ट कल्चर को, हमारे टेक्स्ट एक्सप्लोर हो रहे हैं, हमारे कल्चर के हम लोग उस एस्पेक्ट को जान सके जो पहले नहीं जान सकते थे, सो दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ गुड जॉब टू अस। देखो एक इंटरप्रिटेशन तुमने बहुत सटीक दिया है, जैसे बेसिकली दे वर इन नीड ऑफ knowledge of Indian past for the sake of not efficient administration but efficient colonial administration, कि हम ज्यादा सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, हम इंडिया से मैक्सिमाइज भी कर लें प्रॉफिट को और इंडियंस को डिस्प्लीजर भी ना हो, तो हम उनके अनुसार उनके ट्रेडिशन और कस्टम के अनुसार उनको रूल करें ताकि वो ज्यादा कंफर्टेबल रहे।
That is the one factor. Second one factor was that they harmed us in many ways. First of all, they misinterpreted in our past and culture. अब suppose you can say we are not having the knowledge of our great grandfather. If someone is just going to tell you, do you know about your great grandfather? I am having a lot of research on your great grandfather. You are enthusiastically, yes, yes. What is? Your great grandfather was a very tall personality and he was very handsome. You are taking my side, yes. But he was very selfish person. You are just going of selfish and slightly cowardice as well. And slightly lazy as well. तो अब तुम अपने ग्रेट ग्रैंडफादर के बारे में वही आइडिया फॉर्म कर रहे हो जो उस मैन ने फॉर्म करवा दिया, और बाद में पता चलता है कि रे भाई सब तो उल्टा सुल्टा बताया हो। तो दो कारणों से उल्टा सुल्टा बताया हुआ। क्यों? एक तो हमारे पास्ट एंड कल्चर की समझ उन्हें नहीं थी, वो एक समझते नहीं थे। दूसरा, उन्होंने इंटरप्रेटर के रूप में ले लिया ब्राह्मिन्स को, तो डबल फिल्टर्ड हो गया। एक तो उनके चश्मे से, दूसरा ब्राह्मिन्स के चश्मे से, और ब्राह्मिन्स ने वही इंटरप्रेट किया जो उनकी अपने एलिट मतलब इंटरप्रिटेशन के अनुकूल हमारे पूरे शास्त्र को अपने प्राचीन पर्सपेक्टिव से इंटरप्रेट करके रख दिया। तो बेसिकली एक तो वो हमारे सोसाइटी को समझने में वो नाकामयाब थे, उल्टा ब्राह्मणों ने भी उनको थोड़ा सा बरगला दिया। उन्होंने ले दे के हमारे पास्ट और कल्चर को काफी डिस्टॉर्ट कर दिया। और तीसरा, उन्होंने ये कहा कि देखो भाई, तुम्हारा तो एंशिएंट बहुत ही ग्लोरियस था, but unfortunately the medieval period is declining under the Muslim rule. So implicitly they infused communal historiography in our culture, but they just try to, ये भी लगा कि भाई इसको ज्यादा तारीफ कर देंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि बहुत ओवर कॉन्फिडेंट हो जाए। तो कहा कि देखो एंशिएंट ग्लोरियस था, तुम्हारा मेडिवल डिक्लाइनिंग है, लेकिन चिंता मत करो, अब हम आ गए, तो तुम्हारा जो मॉडर्न होगा ना वो हम फिर तुमको एंशिएंट ग्लोरी में ले जाए। तो पहले, सबसे पहले एक पोस्ट मॉडर्निस्ट थिंकर, his name is Michel Foucault. He has given the concept of knowledge power. कि knowledge is always imposed by the higher authority on the lower one. Knowledge is also imposed by the higher authority on the subordinate. And this was further, you can say, assimilated in Indian context or in any other context. You can say Edward Said, Orientalism. Orientalism is a sense of otherness. मैंने ऊपर से लगता है हमारी तारीफ कर रहे हैं, अंदर ही अंदर सेंस ऑफ अदरनेस है कि वो अदर सोसाइटी है, उसकी एक खासियत है, तुम लोग नहीं समझे हो। ये थोड़ा एब्स्ट्रैक्ट हो गया है ना, थोड़ा कंक्रीट बना दो इसको। कुछ बोलते नहीं हो तुम, विभ्रम की स्थिति में हो। बहुत मुश्किल से तुमने ठीक है कहा। सुनने के लिए धन्यवाद। जैसे 5 स्टार होटल में two gentlemen have went into the 5 star hotel. They are just, you can say, directors of some company, but some rustic people from the countryside have entered into the 5 star. Possibly someone has financed him. Dhoti clad man, very, you can say he was not having the modern standard of manner and the basic culture or the etiquette of the 5 star hotel. They are just speaking very loudly, they are laughing very loudly. तो एक जो दो कंपनी के जो डायरेक्टर से एक बोल रहे हैं दूसरे को, यार लाइफ कहो तो इसका है, क्या बिंदास रहता है, मस्त रहता है। एक अपने लोगों को देखो, जब मुस्कुराना भी हो तो चेहरे को मुरझा के रखना पड़ता है, जब रोने की इच्छा हो तो मुस्कुराना पड़ता है,
अरे अपना का कोई लाइफ है। तो दूसरा ने कहा भाई तुम्हें क्या करना है, तुम भी बिंदास हो जाओ, स्टार्ट लाफिंग, स्टार्ट टू स्पीक लाउडली जस्ट लाइक हिम। तो उसने कहा मैं नहीं कर सकता, मैं कैसे वैसे कर सकता हूँ, मैं तो नहीं। उसकी तारीफ कर रहा है या अपना बड़प्पन लूट रहा है? समझा मेरी बात? वो हमारी जो तारीफ भी करते थे ना, कहते थे इनके लिए तो ठीक है, लेकिन अपन के लिए वो ठीक नहीं, ये इनके लिए ठीक है, हम लोग तो ज्यादा सुपीरियर। They were having a sense of superiority and they are having a sense of otherness to the Oriental people. So this was Orientalism. So all are related to each other. Then we move to next one phase. Are you ready to accept the next one phase? Industrial phase. बस इंडस्ट्रियल फेज पर ही जाके छोड़ देंगे, तुम लोगों को सैंपल दिखाना था कि मेंटली प्रिपेयर्ड हो। ये तो हमारा चलेगा पोस्ट इंडिपेंडेंस तक इसी तरह इंटीग्रेटेड। अप्रोच का अंतर समझ में आया ना? अब तुम्हारा बुक क्या हो जाएगा पता है? अब तुम अपने बुक को रिफॉर्मुलेट इस आधार पर करोगे, मेरा बुकलेट जो रिफॉर्मुलेट है, इसलिए तुम बुक पढ़ोगे बाद में, तुम हमारे वाले एसिमुलेट करोगे और जहां भी तुम पढ़ोगे उसको ऐसे इंटीग्रेट करके पढ़ो। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? बुक ही रिफॉर्मुलेट हो जाएगा। अकेला कोई टॉपिक नहीं पढ़ना है, करंट भी तुम पढ़ते हो अकेला नहीं पढ़ना है, स्ट्रक्चर बनाओ डालो। इकोनॉमी में कोई अकेला टॉपिक बनाना चाहता हूँ कि व्हाट इज द टैक्सेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, तो मुझे बड़ी तरस आती है। अरे टैक्सेशन सिस्टम को मैक्रो में रख के दिखाओ ना बच्चे को, ताकि मैक्रो इकोनॉमिक चेंज के साथ टैक्सेशन सिस्टम को समझे। आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? और मैं इकोनॉमी पढ़ाता तो वैसे ही पढ़ाता, मैं क्या क्या पढ़ा, हिस्ट्री से ही फुर्सत नहीं हो पाती। जैसे पॉलिटी में भी मैं वही चीज है, मैं अपने इंस्टीट्यूट में वही किया हूँ कि सबको हमने ये करके इंटीग्रेट करके दिया हुआ है कि आप इंटीग्रेट करके, अब इंटीग्रेट करके बच्चे समझ रहे हैं, वैसे समझ में ही नहीं आता। बस क्लास खत्म, बात खत्म। तो इन पोस्ट इंडिपेंडेंस तक तो मैंने इसी तरह तुम लोगों को कर दिया। एंशियंट भी पढ़ाऊंगा, वो भी इंटीग्रेटेड, मेडिवल भी पढ़ाऊंगा इंटीग्रेटेड, हिस्टोग्राफी का भी टच दूंगा। और इन्फॉर्मेशन इन्फॉर्मेशन तुम्हारे इतना किसी को याद ही नहीं होगा। इंटीग्रेटेड में ऑटोमेटिकली यू जस्ट लर्न द आर्ट ऑफ how to assimilate the things. Industrial phase. This is the last one. I'll just show you because even the time is going to be. Oh, अच्छा time is with. तो इंडस्ट्रियल का डायग्राम बना दे, थोड़ा समझा देता हूँ क्या। दैट इज कॉलोनियलिज्म है। और इंडस्ट्रियल फेज 1813 टू 1858। ऑब्जेक्टिव टू क्रिएट इंडिया as a market for British, create India as a market for British manufactured products and supplier of raw materials.
political policy to annex more and more states, to annex more and more states and 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 to promote imperialist expansion, imperialist expansion. Administrative policy to bring to bring to bring reforms in administrative structure, economic policy, economic policy, economic policy to economic policy to transform Indian economy in bit in the interest of British industrial capitalism. Industrial capitalism. Social policy to bring social reforms and English education, English education and cultural policy, cultural policy, liberal and utilitarian ideas, liberal and utilitarian ideas, liberal and utilitarian ideas. सॉरी लिख लिया है.
भूल गया। To bring social reforms कर देना है, to bring social reforms and to promote English education. ये वाला, ये, हाँ ठीक है, राइट, ओके। टेन मिनट्स में मैं इसको ब्रीफ कर देता हूँ, जस्ट 1 मिनट। Here also, one is the economic factor you observe here, and the colonial factor is the primary factor. The colonial interest is the primary interest, because the colonial interest is the basic relation is the colonial one. But the two other factors were also influencing factors. If 60% is the colonial factor, 20% role of personality and role of ideology, means liberal and utilitarian ideas. They are just advocating for the changes. The story starts in 1813 up to beginning of 19th century. Now, Industrial Revolution started to influence the British policy as well as the policy on India, or British policy towards India, because there was the rise of industrial capitalism in Britain, and then the industrial capitalism put a demand, placed a demand why Indian market has been closed to us, because East India Company was enjoying the monopoly of Indian market. So there was the dominance of mercantile capitalism on India. With the rising industrial class, it was more powerful and it was able to influence the British policy and even the parliamentarians. So finally, British parliamentarians succumbed to the pressure, and they introduced an act that is called the Charter Act of 1813, on whose basis the Indian market was kept open for the British industrial and manufactured products. Even at that time, the British capitalist class was advocating to the British government to take the administration of India directly into its hand. But British government was not ready to take such a big role at this stage. So the British government still, the British government still, just allowed the company to rule in India. It allowed, but the British government was not still, you can say, ready to take the charge. So it allowed the company to rule in India, but a company had to pack up its trade. It has to continue on the administration of India.
So company had to change the route. Although British capitalist class was not satisfied, they demanded the complete abolition of the company rule. But at this stage, the government was not ready. But company had to play another role. Now it had to function for the betterment of industrial capitalism in India. So that was going to influence all the British policy towards India. The policy of ring fence was discarded, and there was the promotion of the policy of conquest and annexation completely. अब यहाँ पर तुम फिर आ जाओ, एक एक गवर्नर जनरल, लॉर्ड हेस्टिंग्स, the Anglo-Nepalese War and the Third Anglo-Maratha War, annexation. Then come its successor, Lord Amherst, the First Anglo-Burmese War, annexation of Assam. The home kingdom was eliminated by the British. Then come to William Bentinck. He was mainly known for reforms, but he annexed Mysore. Then comes the turn of Auckland, 1836 to 42, the first Afghan war, the first Afghan adventure. Then successor was Ellenborough, 1842 to 44, annexation of Sindh. Then comes the turn of Hardinge, Lord Hardinge, 1844 to 48, the first Anglo-Sikh war and annexation of Kashmir and some region in Kangra. Then comes the turn of Dalhousie, who has used the ideology as well as the method of war both. अब उसी में क्वेश्चन आपसे पूछ देंगे, Dalhousie changed the map of India so fastly, which was not possible even with war. Comment. तो स्टूडेंट्स को समझ में नहीं आता है कि मैं क्या लिखूं. Okay. So administrative policy, up wide extent reforms, the legal reforms, Macaulay system, the Macaulay code. Then रिफॉर्म्स इन रैयतवाड़ी एंड महलवाड़ी. अब जैसे तुम लोग पढ़ते हो तो परमानेंट सेटलमेंट पढ़ लेते हो और साइड बाय साइड रैयतवाड़ी और महलवाड़ी पढ़ लेते हो, लेकिन रैयतवाड़ी और महलवाड़ी दे आर द प्रोडक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म एंड परमानेंट सेटलमेंट वाज द प्रोडक्ट ऑफ मर्केंटाइल कैपिटलिज्म. आखिर कॉर्नवालिस ने कॉम्प्रोमाइज क्यों किया था कि परमानेंट सेटलमेंट, कि जमींदार से जो भी लेना है वंस फॉर ऑल ले लो. उसका दो मकसद पूरा हो रहा था. एक डेफिनेट अमाउंट आ रहा था जो ट्रेड में वो इन्वेस्ट कर पाता. दूसरा, उसको लगता था कि अगर जमींदार को हम फ्यूचर प्रॉफिट जमींदार को दे देंगे तो दे विल प्रूव प्रोग्रेसिव जमींदार एंड दे विल वर्क फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इन बंगाल. एंड मोस्ट ऑफ द ट्रेडेबल गुड्स ऑफ द ब्रिटिश कंपनी वर द एग्रेरियन प्रोडक्ट्स. So the British company could expand its trade through the revenue system. अब आ गया रिकार्डो का रेंट थियरी. डेविड रिकार्डो का, he was a capitalist. उसने रैयतवाड़ी और महलवाड़ी सिस्टम को इन्फ्लुएंस किया है. और रिकार्डो का रेंट थियरी क्या है, ये सब डिटेल्स में क्लास में बताऊंगा. तो वो इन्फ्लुएंस करेगा रैयतवाड़ी और महलवाड़ी सिस्टम. लीगल सिस्टम को रिफॉर्म्स किया है. मिलिट्री स्ट्रक्चर में चेंज लाया है. मिलिट्री में अभी एक यूनिफॉर्म मॉडल कायम कर दिया, तभी तो रिवोल्ट हुआ 1857 का. जैसे देखो, बैटल ऑफ पलासी के बाद सर जगन्नाथ सरकार ने कहा कि with the battle of Plassey the medieval age ended and modern age started. So this view has been countered by whom? Other scholars. In what way you have brought the changes? In the first part, in the mercantile phase, you didn't bring the change for the next 50 years. Rather, the loot of Bengal started after the battle of Plassey. So why modernization? इस फेज में ब्रिटिश क्लेम करते हैं मॉडर्नाइज करने, क्योंकि उन्होंने लीगल सिस्टम को रिफॉर्म्स किया, बाकी सिस्टम को रिफॉर्म्स किया. इकोनॉमी में देखो, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर. उनको कैश क्रॉप्स चाहिए था, उनको ग्रेन्स चाहिए था,
They needed raw materials for their industries. They opened the market for British manufactured goods, so there was the decline of handicrafts industries and there was deindustrialization in India. But there is the debate कि how far India was deindustrialized. GS में तो सीधे deindustrialization बोल देते हैं, ऑप्शनल में डिबेट डिस्कस करना पड़ता है हिस्टोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू. Role of railways, modern telegraph and transportation, all transformation you can see. अभी सोसाइटी में चेंज वो क्यों कर रहे हैं? तो सोसाइटी में चेंज इसलिए कर रहे हैं कि so far as they are not going to bring Indians from their traditional mode, Indians would not accept the modern education, and then they could not produce a type of Indians which could be Indians in blood and complexion, but British in taste, temperament and morality, and that will work as the market for British manufactured products. And जो liberal utilitarians है, they are talking about change, or intelligence was talking about continuity and tradition. They are talking about change, क्योंकि change required है इसके लिए. तो इसकी अच्छा ये भी रिफॉर्म्स की बात कर रहा है, तो 3 फैक्टर यहाँ काम कर रहा है. एक 60% ये, 20% ये और 20% पर्सनालिटी. तो इस सब पर क्वेश्चन है, सब पर हिस्टोग्राफिकल डिबेट है, जो मैं रेगुलर क्लास में आपको बताऊं. तो आपको मेंटली प्रिपेयर्ड हो जाना है कि आपको इस तरीके से पढ़, जैसे वर्ल्ड हिस्ट्री में आपने इंटीग्रेटेड पढ़ा है ना, तो इस तरह से अब देखो, अब आगे का तुम्हारे साथ कुछ प्लान करना है और उसमें तुम लोगों का थोड़ा सा कोऑपरेशन चाहिए. मुझे 5 क्लासेस वर्ल्ड हिस्ट्री में और लगेंगे. तो कल क्या है कि कल मुखर्जी नगर में एक बहुत बड़ा मतलब प्रोग्राम है, वहाँ कुछ एंड अनअवॉइडेबल है, वहाँ मेरा प्रेजेंस जरूरी है. तो एक्चुअली आई शैल बी देयर. तो कल मैं क्लास नहीं ले पाऊंगा और मैं प्लान कर रहा हूँ सैटरडे और संडे दोनों दिन कंसेक्यूटिवली वर्ल्ड हिस्ट्री का क्लास ले. तो 2 दिन इधर हो जाएगा और 3 दिन अगले वीक में हो जाएगा. देन आई विल स्टार्ट इन. तो उसमें तुम लोगों का कोऑपरेशन रहेगा. तुम तो वैसे भी गायब हो जाती हो, कल 2 दिन रहोगी. अपडेटेड है, लेकिन ऑनलाइन से काम नहीं चलेगा ना. ऑनलाइन में मुझे मजा नहीं आता, कुछ बच्चों का फेस दिखे तब तो मजा आता. क्या सेम टू सेम टाइमिंग में हम कोई छेड़छाड़ नहीं करते. टाइमिंग हमारा प्रॉमिस है कि एक बार टाइमिंग फिक्स कर दिया तो हम टाइमिंग में छेड़छाड़ नहीं करते. जिस टाइमिंग में मैंने तुम्हारा एडमिशन लिया है उसी टाइमिंग को हम बरकरार रखेंगे. बहुत लोग छेड़ देते हैं कि आप आ जाइए 2 बजे, और फिर स्टूडेंट चिल्लाते रहते हैं, मैनेजमेंट कान में तेल दे के बैठ जाते. तो मुझे ये नहीं, ब्रीच ऑफ कॉन्टैक्ट कुछ नहीं, जो मैंने तुमको कहा है वो टाइम रहे. 5:30 ऑन सैटरडे, 5:30 ऑन संडे. ओके. क्योंकि देखो एक्चुअली है क्या कि न चाहते हुए दीपावली और छठ में छुट्टी हो ही जाती है. मुखर्जी नगर में भी हो जाती है, यहाँ भी. मेरा दिल्ली का एक्सपीरियंस ये है कि अब उसमें अगर अभी छुट्टी करेंगे तो फिर बहुत सारा हॉलीडेज अब निकल जाएगा. और इंडिया फेस्टिवल का वैसे भी कंट्री ऑफ फेस्टिवल्स एंड दीपावली के टाइम में मुझे भी थोड़ा सा यूरोप का ट्रिप है, थोड़ा सा मैं 2-4 दिन उधर इंगेज रहूंगा. तो इधर मैं चाहता हूँ मेकअप कर लूँ इस चीजों को, है ना. तो यू पीपल हैव टू. ओके, गुड नाइट. ये बुकलेट, सॉरी, इस बुकलेट को तुम लोग फॉलो करोगे थॉरोली. यही बुकलेट फिलहाल रहेगा तुम लोगों के साथ, है ना.